Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to the topic of probability. In this particular video session, just we are going to discuss about the probability of an event. In the previous video session, just we have discussed about the types of events. So particularly, आज होची probability topic रो third video session. Previous video session तब second part रे आमे already types of event एवं ता ऊपर base करी किसी example discuss करी सारिचे. आज की क्लास रे आमे discuss करिबा probability of an event. In a random experiment, let S be the sample space and let E subset of S. जदि गोटे इवेंट जदि गोटे सेट सैंपल स्पेस रो सबसेट होउची तमन ताको कहा जिवो इवेंट. Then E is an event. The probability of occurrence of E is denoted by probability of E. It is defined by probability of E is equal to cardinality of E divided by cardinality of S. बा हमें कहि परिबा number of elements present in the set E divided by number of elements present in the set S. Again, alternative definition भी हम यूज करि परिबा probability of E is equal to number of outcomes favorable to the occurrence of the event E divided by number of all possible outcomes जोटा को हमें कहउचे sample space. तो बेसिकली ए डेफिनेशन को बेस करके आज वीडियो सेशन रे हम किछिटा नोट्स पढ़िबा आ किछिटा प्रॉब्लम्स करिबा एवं किछिटा प्रॉब्लम मु तुमको टैक्स देबी. तो ये थला फार्मूला देन जिबा किछिटा प्रॉपर्टी पाखु. Note number 1 for impossible event. If E is an impossible event, then E is equal to phi. That implies E ro cardinality is equal to phi ro cardinality. That implies E ro cardinality is equal to 0. जहाँ जेहेतु impossible event आमे कहाउ कहूचे ना जो इवेंट भितर कोनोसी एलिमेंट नथिबो ता माने सेटा होची गोटे एम्प्टी सेट नल सेट बा void सेट. तो E रो cardinality केते गला 0. But we know that simply आमे लिखिबा we know that probability of E is equal to cardinality of E divided by cardinality of S. That implies probability of E is equal to E रो cardinality आमे just एठी पाइथले केते ना 0 0 divided by S. That implies probability of E is equal to 0. को केस रे impossible event केस रे probability रा value 0. Impossible event माने से इवेंट भितर कोनोसी एलिमेंट नथिबो. That means this is the minimum value of the probability. एटा होची सबटु स्मॉलेस्ट वैल्यू. याटू आ तळु किछि वैल्यू नाही. ये थिला फॉर impossible event. देन जिबा नोट 2 रे डिस्कस करिबा फॉर sure event. Note number 2 for sure event. If E is a sure event, then sure event क्या कहूचे जो इवेंट टा टोटली सैंपल स्पेस सहित इक्वल, then E is equal to S. That implies E रो cardinality is equal to S रो cardinality. Again, we know that आमे फॉर्मूला पढ़िचे एबे जस्ट रिसेंट पढ़िले probability of E is equal to E रो cardinality divided by S रो cardinality. जेहेतु probability जेहेतु cardinality of E जहा cardinality of S सेया तो मुता ए दुटा कैंसिल हे जिवो जेहेतु दे आर इक्वल विथ ईच अदर ता माने केते बळिवो एठी 1 बळिवो. Sure event से इवेंट जोटा सैंपल स्पेस सहित इक्वल ता माने ताठो अधिक एलिमेंट कोनोसी इवेंट नथे नाही कोनोसी इवेंट रो ताठो अधिक एलिमेंट नाही. दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. Sure event रो मैक्सिमम वैल्यू मिले दैट इज 1 ता माने 1 रु अधिक कोनोसी वैल्यू दबो नाही कोनोसी इवेंट रो प्रोबेबिलिटी. सो मिनिमम वैल्यू हैला 0 मैक्सिमम वैल्यू हैला 1. देन जिबा नोट नंबर 3 पाकु. Note number 3, we know that आमे जानिचे फाइ होची समस्तंकर सबसेट
तामाने से ई रो मध्य सबसेट आउ ईटा आम बेटर जानीचे ईटा हूँ सैंपल स्पेस रो सबसेट जेहेतु ई हूँ गोटे इवेंट समस्त मुझे कार्डिनालिटी नहीं जीवी ताले फायर कार्डिनालिटी केते हो जीरो जिते बेले कार्डिनालिटी जो सेट मानकर सेट भितर सबसेट संपर्क थिला जिते नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाखु आम आसिले भारी देन सबसेटा कौन होगा ना लेस दैन इक्वल टू 0 लेस दैन इक्वल टू ई कार्डिनालिटी लेस दैन इक्वल टू एस कार्डिनालिटी सबू एलिमेंट रे मु कौन कली ना एस कार्डिनालिटी गोटे डिवाइड करदेली 0 यहाँ हूँ आम फर्मुलाटा मिडिल टर्मटा ये हो गला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सो जेकोसी गोटे इवेंट नब तार प्रोबेबिलिटी आइदर 0 हम ना 1 हम ना भीतर रो केते हम ना जब सी इम्पॉसिबल इवेंट हम 0 हम जदि सी 1 हम ताले सी सियोर इवेंट हो इम्पॉसिबल इवेंट आ सियोर इवेंट को छाड़ीदे जेकोसी इवेंट तुम मिल तार भैल्यूटा 0 आउ 1 भितर आसो जोटा कि फ्रैक्शन बा डेसिमल फॉर्म आसो आंसरटा ठीक अच्छे तो ये थिला बेसिकली 3टा नोट आम पढ़ले प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला को बेस करके देन जीवा एक्सियोमेटिक अप्रोच एंड देन प्रोसीड करवा प्रॉब्लम पाखक देन डिस्कस करवा एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी लेट एस इज इक्वल टू W1 W2 W3 WN ए W1 कौन ना सैंपल स्पेस भितर थिबा गोटे गोटे सैंपल पॉइंट विथ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉइंट जेकोसी गोटे मुता भितर नेबी ता भितर जेकोसी गोटे WI नेबी बा W2 नेबी बा W3 नेबी जेकोसी नेबी तार वैल्यूटा क्या भितर रहिबो ना 0 आउ 1 भितर रहिबो देन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स सैंपल स्पेस माने क्या सहित सामान प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस हूँ सियोर इवेंट सहित सामान जदि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस टोटाल 1 है ताने से केमती 1 मिलला ना ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट रो प्रोबेबिलिटी बाहर करिकी जदि हम मिसेबा मध्य आंसर 1 मिलिबो सो ये थिला एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी देन जीवा प्रॉब्लम सेक्शन पाखको तो फर्स्ट प्रॉब्लम पाखको जीवा प्रॉब्लम नंबर 1 Problem number 1 if a coin is tossed once then find the probability of getting a head देन सॉल्यूशन पार्ट पाक जीवा से कही गोटे कॉइन को थरे मात्र टच कराई इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस देन द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय S इज इक्वल टू H, T एटा तो सैंपल स्पेस कार्डिनालिटी इज इक्वल टू 2 लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड दैट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू ता भीतर आमर कौन दरकार केवल हेड दरकार तामाने एठी E रो कार्डिनालिटी केते हला ना 1 हला वी नो दैट probability of E is equal to E ro cardinality divided by S ro cardinality that implies probability of E is equal to 1/2 आंसर आम लिखा so the probability of getting a head is 1/2 and this is the solution. सो ये था कंप्लीट प्रोसीजर लिखार ये गोटे प्रोब्लेम को केमती आंसर जाए केमती बीट स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए ये था कंप्लीट प्रोसीजर गोटे भी स्टेप ता भीतर छाड़ा ठीक नुह देन जीवा प्रॉब्लम नंबर 2
Then you have problem number 2. Two coins are tossed once at the same time. Find the probability of getting two heads, one head, no head, at least one head, at most one head. ये तो गोटे मु सॉल्व करिबा कि तो तुम टास्क जदि किछि प्रॉब्लम हला देन तुम जदि मते मेसेज करिवो कमेंट बॉक्स रे लिखिवो देन मु ताकू सॉल्व करी सेंड करिवो नले वर्तमान मु गोटे सेंड ताकू गोटे सॉल्व करूची. Two coins are tossed once at the same time. If two coins are tossed once at the same time, then S is equal to HH, HT, TH, TT. That implies cardinality of S is equal to 4. Then you have first bit pakhku. Two heads event nova. Let E1 be the event of getting two heads. तो हमको सैंपल स्पेस भीतर देखिबार अछि को सैंपल पॉइंटटा दुईटा हेड रखी चारटा सैंपल पॉइंट अछि ए सैंपल पॉइंट रे दुईटा हेड अछि दैट इंप्लाइज E1 is equal to HH. केतरा एलिमेंट ना गोटे आसिला तो माने कार्डिनलिटी ऑफ E1 is equal to 1. We know that probability of E1 is equal to E1 रो कार्डिनलिटी divided by S रो कार्डिनलिटी. That implies probability of E1 is equal to 1 by 4. So the probability of getting two heads is 1 by 4. So ये थला क्वेश्चन नंबर 2. देन जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मु क्वेश्चन गुडा को देई दउची टैक्स तो मन पई सॉल्व करिया पई देन ता भीतर जो जोड़ा न हबो देन मु नेक्स्ट वीडियो सेशन ने मु तुमको करी दे देबी. ठीक अछि. तो ये थला क्वेश्चन नंबर 2. देन जिबा 3, 4, 5. Then you have question number 3 bagu. 3 unbiased coins are tossed once. Find the probability of getting either all heads, two heads, one head, no head, at least two heads, at most two heads, one head on the first coin. तो फर्स्ट मु तो सैंपल स्पेस पाखु जाउची फर्स्ट बिट को मु सॉल्व कर दूची at the same time. एटा लिखि दबा at the same time. If 3 unbiased coins are tossed once at the same time, then the sample space is given by S is equal to HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT. And here cardinality of S is equal to 8. First bit back jiba. Let E1 be the event of getting all heads. सब तो ताकि हेड थो किसी भी टेल न थियो. That implies E1 is equal to गोटे एलिमेंट से बढ़िया अछि कोडा ना HHH तो HHH. That implies E1 रा कार्डिनलिटी is equal to 1. तो S रा कार्डिनलिटी मिली गला E1 रा कार्डिनलिटी मिली गला. We know that probability of E1 is equal to E1 रा कार्डिनलिटी divided by S रा कार्डिनलिटी. That implies probability of E1 is equal to 1 by 8. And this is the answer.
आम लास्ट आउटलाइन लिखा सो द प्रोबेबिलिटी of getting all heads is equal to 1 by 8. Then the rest of the questions are tasked for you. बाकी सब तुम करिवो. Then जिबा question number 4 and 5. Then जिबा question number 4 पाखु a die is rolled once, find the probability of getting an even prime number, an even number, a number less than 3, a number less than 7, a number less than 6. तो पांचटा बिट देछि. Solution. If a die is rolled once, then the sample space is given by S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and here cardinality of S is equal to 6. First bit पाखु जिबा let E1 be the number let E1 be the event of getting an even prime number. An even prime number गोटे जुग्म मौलिक संख्या तो भितर केवल जणिए अच्छी से 2 दैट इम्प्लाइज E1 is equal to set of the element 2 that implies E1 रो cardinality है 2. We know that probability of E1 is equal to E1 रो cardinality divided by S रो cardinality. That implies probability of E1 is equal to E1 रो cardinality केते ना 1 गोटे एलिमेंट अछि तो तार cardinality हला 1 divided by 6. So the probability of getting an even prime number is equal to 1 by 6. गोटे मिस्टेक मु कर देथिली E1 सेट भितर केवल गोटे एलिमेंट अच्छी 2 मुझे मिस्टेक बाई मिस्टेक 2 लिखी देथिली तो जेहेतु गोटे एलिमेंट अच्छी गोटे सिंगलटन सेट तार कार्डिनलिटी है 1 तो जेमती हम जानिचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फार्मूला है E1 कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाय S कार्डिनलिटी 1 डिवाइडेड बाय द कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस दैट मींस 1 by 6. Hence the probability of getting an even prime number is equal to 1 by 6. Then the rest of the a question to mu kardeli rest of the chapter question to pai tax rahila to complete karibo. Then jiba question number 5 pakhu which is the last bit of our today's video session. Then jiba last bit pakhu question number 5. Question number 5 रे देछि two dice are rolled simultaneously, find the probability of getting same number on both dice, an even prime number, a multiple of 3 as the sum, a total of at least 10, a doublet of even number. So this is the last question and this is the task for you. So particularly in this video session just we have discussed about the probability of occurrence of an event, the formula of the probability of occurrence of an event and some of the properties based upon the probability of an event and then some of the problems. Till the next video session, thank you.